So how many of you are giving mains अभी यहाँ पे? Fine. और आपने ऐसे के लिए कुछ किया है, मतलब have you identified your problem, like when you write essay, any area that you find is challenging? क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हाँ, पेस्टल अप्रोच क्या होती है? आई डोंट नो. अच्छा, फाइन. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will focus on philosophical essays. हालांकि I expect कि those who are giving exam this year, they should also be preparing essays on 3 more topics like women always rules वहां पे रहता ही है, and then environment और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब पेपर का तो ट्रेंड बदल ही सकता है, तो उस पे भी ट्राई टू प्रिपेयर. अब फिलोसफिकल एसेज, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand that this is the only paper where you are very free to write. Fine. Here you cannot adopt any specific style. Fine. So this is not general studies paper. This is an essay paper, and don't follow any style. ठीक है, तो अभी का जो राइटिंग ट्रेंड है उसमें कोई स्टाइल मैटर करता नहीं है, और प्री डिफाइंड फॉर्मूले से नहीं जाना है. बिकॉज द वे ही इज सेइंग पेस्टल अप्रोच और वॉट एवर अप्रोच, कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखें, हम उसका सोशल लिखें, लेकिन हर टॉपिक ऐसा नहीं होगा. एवरी टॉपिक इज यूनिक इन इटसेल्फ. फाइन. तो बिफोर लुकिंग एट एन एसे, there is no need to pre-plan. First look at an essay and then decide, and there is no right way of doing, no wrong way of doing it. कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी है. फिलोसॉफिकल एसेज में इज, आर यू एबल टू डीकंस्ट्रक्ट द टॉपिक. सबसे पहले टॉपिक का डीकंस्ट्रक्शन करना है. यू शुड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट. नाउ सेकेंड, फिलोसॉफिकल एसेज मीन्स रिफ्लेक्टिव एसेज. रिफ्लेक्टिव एसेज मीन्स व्हाट? you have to go deep into and see what is the hidden meanings, what are the deeper meanings. एक फिलोसॉफिकल एसेज है और एक ऑर्डिनरी एसे है. यानी कि जो फिलोसोफर है या उसके एक्सपेक्टेड क्या है, दैट पर्सन शुड बी एबल टू सी मच डीपर देन व्हाट अदर्स हैव नॉट सीन. मतलब थोड़ा डिफरेंट लेवल पे जाके, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जाके करना है. अब नेक्स्ट है, यू ऑल नो, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको व्हाट दिस एसे इज अबाउट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द एसे एंड इट्स आर्ग्यूमेंट्स, एंड conclusion is, on the basis of this analysis, what position are you going to take on this particular issue. तो सिंपल रखो, पहले से कोई माइंड पर प्रेशर नहीं रखो कि ऐसे लिखना है, ये पैटर्न है. कोई पैटर्न नहीं है. यू कैन सेट अप अ पैटर्न. ठीक है. आई होप यू ऑल रिमेंबर वंस आई टोल्ड इन द क्लास अबाउट रूसो. Fine. So there was an essay competition
on the role of science and enlightenment, everybody wrote in favor, but Rousseau wrote in the other way. Still he got the prize. Fine. So essay is reflective essay is trying to understand your approach of understanding the things. Now there can be n number of topics you can't prepare. The only thing is you should develop capacity to think about it. Normally, what are the trends in philosophical essays? The normal trend is dealing with the normal philosophical questions. What philosophers have dealt. One very fundamental question of philosophy is always, what is life? What is the purpose of life? What is the meaning of my existence? And how should I fulfill my existence? तो existential questions होते हैं, पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई ट्रेट होता है, उसके ऊपर आपके थिंकिंग को वो सोचते हैं. ठीक है. तो टुडे हमेशा इफ जस्ट what is expected, write in an orderly fashion. Orderly fashion क्यों चाहिए? इसलिए so that the person you are making the reader comfortable, और आपके ideas में एक evolution होना चाहिए. For example, अगर आप एक evolution लिख रहे हैं, suppose I talk about India, development of India's democracy, तो एक उसमें कोहेरेंस होना चाहिए. Either I start from now and reach back, or I start from beginning and then reach. It should not be haphazard. Fine. And write precisely. Credit will be given for effective and exact interpretation. Yeah, exact expressions. What is required, you write. How will you make it effective? What is effective representation? No. Yes. अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स देते जाओ, ठीक है, और entire essay you fill with examples. But tell me, giving one example of something, giving 10 examples of something, or giving 3 examples, what difference it will make? Are they asking you to keep on illustrating? Are they asking you to show economic, social dimension, even if it is not? So treat every topic as a unique topic. Think with fresh mind. Don't have any predefined pattern. Keep it unpatterned. Fine. So now I will deconstruct some topics today, and we will do the brainstorming, like how a essay has to be approached. This is previous year, and then we will discuss few these questions. So now 22, this question came, time to repair the roof is when the sun is shining. So how will you deconstruct? इस particular topic का meaning क्या हुआ? Importance of preparedness. ठीक है, तो time to repair the roof मतलब time matters. एक broad issue इसमें preparedness का है. How much you are prepared. Preparation का एक issue है. And time to repair the roof. Roof symbolize what? Shelter. Is when the sun is shining. Sun is shining is when it is a good time. Then itself you make preparations. Fine. And then the question is, time to prepare means time is changing. ठीक है, तो normally
टाइम इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, फिलॉसफी ऑफ टाइम एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलॉसफी ऑफ टाइम, concept of time. Even if you see, the second question is almost same. You cannot step twice in the same river. Fine. तो अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में what is the essence of this particular question? The importance of preparedness in life, or that the time keeps on changing. Why do you have to prepare? Why do you have to prepare? And you have to prepare for what? Fine. So the basic thing is, the question is related to the concept of time. What do you know about concept of time? पहले कैसे हम इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, तो हमें इसका की पता चल गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरनेस. बट it is not just importance of preparedness, it is more about adversity and what should be person's approach towards adversity. Fine. So but here time concept is there. तो टाइम से आप कैसे, इसमें पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए कि हमको पहले एसेंस आइडेंटिफाई हो जाए. ठीक है. that the statement can also be, or this statement is similar to a saying that a stitch in time saves 9, means the importance of being prepared for the bad time. So when we are talking about bad time, हमेशा जो word होता है उसका एक opposite you have to think. Fine. तो when we are talking about the bad time, it means there will also be a good time. When there is a good time and bad time, means time changed. ठीक है. तो टाइम की फिलॉसफी के पीछे जो सेंट्रल आइडिया क्या है? कंसेप्ट ऑफ चेंज. ठीक है. तो व्हाट इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस वर्ड? This word is a word of change. Fine. So in this word is a word of time and space. ठीक है. और टाइम में चीजें जा रही हैं. तो not structure. सबसे पहले let us collect certain ideas. ठीक है. तो this is telling about the very unpredictable, very uncertain nature of life. ठीक है. तो अब लाइफ का क्वेश्चन आ जाता है, यानी यही तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. तो अब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक अ स्टोरी. ठीक है. वी immediately try to answer the question. And when you will immediately try to answer the question, you are going to run short of the word. Fine. So you have to think about a story, that how I will come to this particular issue of change in the life, or time is changing. Fine. So time is changing. Time is a characteristic of what? Time का characteristic I am not saying. Time is a characteristic of the world in which we live. Fine. And always in philosophy develops by dialectics. It means in order to understand the world of change, we have to understand the world of permanence. ठीक है. तो what has been one eternal question of philosophy? Eternal question of philosophy is to
understand the nature of this world and the purpose of or our place in this world. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं उससे डील कर रहा है, पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. फाइन, तो इसका मतलब है इससे थोड़ा पीछे जाइए, टाइम के बारे में, हाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाई दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग. एडवर्सिटी एंड प्रिपरेशन का माइंड में कब आया होगा, क्या सोच के आया होगा. ठीक है, तो और उस जिसने ये सोचा होगा उसने और क्या सोचा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल इन माई लाइफ दैट एडवर्सिटी डजंट कम, or is it possible in my life that good time never comes. So what can be the different messages? Most of the philosophical questions, you can have one very generic style or generic way of starting the very reason for this question. ठीक है, तो एक जेनरिक इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट दैट. अब हम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमें बात करनी है टाइम पर. तो टाइम से हम आ गए यूनिवर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए, यानी कि हम आ गए फिलॉसफी पे. तो हम फिलॉसफी के बारे में भी तो बात कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज फिलॉसफी? सर्च फॉर नॉलेज. आप देखिए आप कितना पीछे जा सकते हैं, कहां पे टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते 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 आप किस बेस पे जा सकते हैं. ठीक है, तो समझते समझते हम नॉलेज पे आ गए, ट्रू नॉलेज. सो व्हाई आर वी सर्चिंग द नॉलेज? बिकॉज it is very natural for human, we have intellectual curiosity. Fine, so with intellectual curiosity we started understanding, and the very first very normal spontaneous curiosity is what am I supposed to do, who am I. Fine, so the human thinking, it starts with the very existential question, who am I. ठीक है, तो एक इंडियन फिलॉसफी में जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कोहम एंड सोहम. ठीक है, कोहम मीन्स हु एम आई, एंड देन people tell you are, जैसे आइडेंटिटी इश्यू होता है, एग्जिस्टेंशियल इशू एंड एसेंशियल इशू, पीपल टेल यू आर दिस यू आर दिस, सो वो कंसेप्ट होता है सो हम. फाइन, तो वी अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स इन दिस वे. ठीक है, तो हाउ विल आई स्टार्ट दिस? तो आई विल स्टार्ट दैट मैन या मैन इज अ rational entity, and hence it is natural that we ask the existential questions. ठीक है, फुल स्टॉप. आप लिखो राइट, इन फैक्ट द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी starts with the search for the answer of this very question.
That is, who am I? Next question. What is the place? What is my place in this universe? Next, what is the nature of the world in which we live? What is the right way of living? या what is the art of living? तो हमेशा raise certain questions. ठीक है, this can be a generic start, that this is how philosophy has started. Fine. Now you can अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे बढ़ाएं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन से दैट these are some common questions. Fine. Across civilizations, across religions. For example, if I talk about the Hindu religion, if I talk about the Buddhism, then try to give certain ideas so that your story moves further and they understand that whatever you will be talking is based on some text. ठीक है, plus I am also trying to show that how this is such a important question. ठीक है, जैसे ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस सिविलाइजेशंस इसको देखा गया. इस तरीके का स्टार्ट आप बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसेस में कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? राइट 10. These are some fundamental questions of philosophy as well as all other streams of knowledge. ठीक है, right, we can see the attempt by the philosophers or intellectuals across civilizations cultures and regions. ठीक है, तो अब नेक्स्ट में वी नो सम क्वेश्चंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट Socrates, who is known in the West as the wisest man, held that knowledge is virtue and to gain knowledge one should know oneself. That is, know thyself. Because know thyself is what?
The existential question. Is that clear? Are you, all of you are from political science or social science background? आपने सॉक्रेटिस तो पढ़ा होगा, लेकिन फिलोसोफर वर्ड की जगह वी कैन यूज इंटेलेक्चुअल. ठीक है, तो उसने ही, हम ही तो जानना चाह रहे हैं हम क्या है, कौन है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी. चाहे फिलॉसफी की बात करें, चाहे पोएट्री की बात करें, एवरीबडी, this existential question is very very significant. So we can give an example from the west, we can also give example from the east, right? Similarly, in Indian philosophy, whether we talk about Gita or Buddhist philosophy, they all aim at unraveling, open up, unraveling the mysteries of human life and providing the guidance as to how we should make sense of our life. ठीक है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है. Now most of us will be more comfortable with the philosophy in Hinduism or Vedanta philosophy. ठीक है, if you know some other you can write, but normally अब हम किसी एक philosophy से भी उस क्वेश्चन से ले सकते हैं कि सबने अलग अलग general to particular, तो it is much easier for majority of us that we start this conception from the Indian, from Hindu philosophy. Fine. So I am telling you, I know, so I am telling you, fine, in the sense ki this conception which I am going to tell is from where? Fine. So this is from Chandogya Upanishad. But even if you don't know, and it is not expected that you know, fine, if you know in Gita, if you know in Quran, Bible, anything, you can just take one stream. Because what we are trying, what I am trying to arrive at, I am trying to arrive at the characteristic of universe. Fine. And I am studying the universe because this is something related to my life. So characteristic of universe will be, we live in a world of, जैसे कैंट ने बोला है वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना में, आइंस्टीन ने भी बोला है रिलेटिविटी, टाइम एंड स्पेस में, तब हम टाइम तक आ जाएंगे. तो फर्स्ट वी इन फिलोसॉफिकल एसेज try to develop a storyline. How will you tell? It is not that what you will tell. Fine. How you will tell? Where, how are you going to approach this particular question? So most of the time this approach may work for you. ठीक है, तो अब वैसे भी पेपर में यू कांट राइट एवरी फिलॉसफी, हमें वही डिस्कशन करने का थोड़ी टाइम है. तो आई विल टेक अप फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो लिखो राइट फॉर एग्जाम्पल, in, you write Indian, Hindu, whatever, in Chandogya Upanishad. Comma.
an attempt has been made to give explanation behind the origin of this world and the purpose of human life. ठीक है, तो now what is a philosophy which you can use? Fine. So normally in philosophy there are two important terms, existence and essence. So essence basically tells purpose of the life and existence the state of being, who you are, etc. ठीक है, और ये interlinked questions होते हैं. तो what is written, what is a story about this world in Upanishads? Fine. So the story says that initially it was existence. अभी लिखो नहीं, पहले इसको समझ लो. एग्जिस्टेंस था, ठीक है. एग्जिस्टेंस मतलब केवल एक सिंगल थिंग वॉज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस. फाइन. तो एग्जिस्टेंस मीन्स यू कैन कॉल इट एज गॉड और ब्रह्मा. ये जो फॉर्मूला है, बहुत सारे आपके रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, लगभग बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आप इसके हेल्प से लिख सकते हैं. ठीक है. तो पहले ओनली गॉड वॉज देयर, गॉड इन द सेंस ब्रह्मा. दे कॉल इट एज माइंड, दे कॉल इट एज अ सुप्रीम बीइंग, यूनिवर्सल बीइंग, कॉस्मिक बीइंग. ठीक है. एंड ब्रह्मा decided, or Brahma thought that I should not remain restricted. Fine. So Brahma has thought that my reflection, I should also grow and I should also reflect. So emerged the different creatures, etc., objects and creatures of this world. Fine. And in all, because they are product of Brahma, product of mind, they all have a reflection of Brahma. Fine. They all are a part of it. तो what is a reflection of Brahma in us? ब्रह्मा क्या है? माइंड. तो रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म हमारे अंदर क्या है? माइंड, जिसको सोल भी बोलते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इन्हीं का ये है कि ओनली गॉड हैज बीन एग्जिस्टिंग इन द बिगिनिंग. गॉड रिप्रेजेंटिंग ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा created the entire universe and its other things. That is why everything in this universe is a reflection of God. Fine. So इसका मतलब क्या है? And this also gives the idea of unity in diversity. So गॉड्स, जैसे हेगल का है रियल इज रैशनल, लगभग ऐसा ही. तो डिफरेंट थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, दे आर डिफरेंट, but at the same time they are all part of Brahma. Brahma is mind. Mind concept is soul, Atma. Fine. So in Indian philosophy, what is Atma? Atma is a philosophical or the rational part of our personality or existence. And
Then similarly, if we talk about humans, humans in Indian philosophy are also considered, they are termed as Atma. Why we are considering it as Atma? Because this part is given more importance in Indian philosophy than the physical part. So person is described in terms of Atma, and person also has a feature of Brahma. ठीक है? And then what is the objective of life here? Yeah, what is the objective of human life? We are not discussing from our side. We are discussing on the basis of text. The objective of the life is to attain, yeah, to realize. Brahma has created this universe because Brahma wants to see himself. Brahma wants his realization in infinite forms. So the purpose is the realization by upliftment and enlightenment of our soul. And in Indian philosophy, now in this question we will not stretch too much, but otherwise you can also say that Indian philosophy also tells how we can enlighten our soul by yoga, by purusharthas, and a very systematic and very organized way of attainment of this. So, realization of God, and then if it is some very abstract, you can start talking about God. So being God, the idea, we have to understand the idea behind. The idea behind is to become rational. To become rational means to give, or to give greater importance to the mind and soul in comparison. And the life cycle is, in Indian philosophy, is that the aim of a person is to attain moksha, or in Buddhism to attain nirvana. So moksha and nirvana is what? Realization of the divine in us. Means when we will become complete divine, the Hindu philosophy says that then we will become Brahma, we will become a part of it, and when we will become a part of it, then we will not be born again. Fine. So this is the philosophy that, and in Hinduism, life and death, the concepts are taken very differently, where death is not actually the end of life. Death is understood as a beginning of a new life, because you believe in the concept of rebirth. So depending upon what issues are they asking. So here, because we have to discuss something on tendency of time. Fine. So I will bring forward that this word has been created. ठीक है? तो छंदोग्य उपनिषद लिखो, राइट, वेयर, या अगर हम ऐसे भी डिबेटेबल मोड में लिखें, तो अब ये तो टाइम का क्वेश्चन है इसलिए इसमें नहीं, लेकिन अगर हम डिबेटेबल मोड में लिखते हैं तो डिबेटेबल मोड में दो बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं. Those who believe that only this world is real. Fine. For example, in modern times, the existentialist philosophers like Sartre, Nietzsche, and others, and they believe in a theory of chaos, that there is no meaning in the life. Life is meaningless. And then there is this one way of life. जैसे question life पर ही हो, तो people have thought in two ways. Life has a meaning or life is meaningless. Fine. You can also talk about as far as the very temporal nature of human life. Even Shakespeare in his play Macbeth says that life is a tale told by an idiot. Fine.
means what is life, how can you lead, there is any specific way of doing things, this is not, so you should have just an idea. तो हम लोग फिलहाल अपने क्वेश्चन के आइडिया के तरफ इसको अभी आई विल टेक इट, ठीक है. तो व्हाट यू हैव रिटन of human life. Fine. So it explains that initially there was only the existence of Brahma, mind or soul, या अल्टीमेट जो भी कहना है आपको, ब्रह्मा, कॉस्मिक बीइंग, एंड ब्रह्मा थॉट ऑफ क्रिएटिंग हिज रिफ्लेक्शंस, एंड thus this physical world comes into existence. आप लिखो राइट, since it is a creation of God, या ब्रह्मा ही लिखते हैं, since it is a creation of Brahma, the physical objects also include the element of Brahma or soul. Full stop, right? This soul is in most evolved form in humans. That is why humans are the highest creation of Brahma or mind. ठीक है. तो अब इसमें ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? अब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन रियल इज रैशनल टाइप ही है? तो अगर रियल रैशनल आता तो यही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में ये एक बड़ा कॉमन थीम है, हम उस तरफ भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है. तो अब ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अटेनमेंट ऑफ गॉड है. ठीक है. इसके लिए ये हम कैसे बताएं, हाउ शुड वी टेल? तो वी शुड हैव वर्ड्स. फाइन. तो what should happen in an essay? Flow should not break. So you should know the word. Tell me the word. How will I connect it? Fine. तो I can say, जब भी हम purpose of life की बात कर रहे हैं, you can always say that the Indian philosophers, they have always taken the teleological view. ठीक है. तो इसमें हम लिख सकते हैं, फिर इसमें लिखो राइट, इन इंडियन थिंकिंग a teleological view is the common theme where the purpose of human life is being defined with the sense of definiteness. ठीक है. अब लिखो राइट, whether we talk about
Upanishads, or we talk about Gita, which is known as one of the most revered, R-E-V-E-R-E, revered या respected texts containing the ultimate wisdom, not just by Indians. हम इसके अलावा भी आपको इंफॉर्मेशन बताते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे गीता के बारे में गांधी ने हमेशा कहा कि वेन एवर आई यूज टू फाइंड directionless, or then Gita always came to my rescue. So among one of the admirers of Gita, you should remember, is Aurobindo Ghosh. Among the philosophical, जो intellectual admirers हैं, हम लोग रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं तो इसी तरह वेस्ट में भी हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने, अल्टीमेट विजडम, फाइन, ठीक है। नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल औरबिंदो घोष, Tilak and Gandhi considered Gita as a text not just for the spiritual growth of the individual, but also society at large. लिखने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडियाज, कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, यू कैन, तुम्हें कैसे आना चाहिए, स्टोरी बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिमिलरली इन द वेस्ट देयर आर मेनी scholars and even scientists who have recognized the wisdom. This includes Oppenheim, J. Oppenheim है ना, है Oppenheimer, the person associated with invention of nuclear weapon. अब इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं शायद शोपेनहार वो भी इन्फ्लुएंस्ड था, बट आप उसको कंफर्म करिए, बिकॉज फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट उतना नहीं है, लेकिन जस्ट यू कैन सी कि शोपेनहार ने भी उसको बिकॉज उसकी फिलोसफी में रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। वो तो तब पता नहीं, अब जो पता है गलती नहीं करो, जितना पता है उतना हम लिख देते हैं। तो अब गीता में ह्यूमन लाइफ के लिए लिखा क्या है, ठीक है। तो लिखो राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट गीता gives the message that this life is not permanent and ultimately
everything in this physical world goes back to the God or its origin, goes back to the God. ठीक है, तो this is how the teleo, you can also talk about Buddhism. ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं similarly Buddhism, which is known as India's rationalist tradition, may not acknowledge the existence of God, but it also talks about, it also gives a teleological view of the life and suggest to follow the eightfold path to lead a life of virtue. ठीक है, अब ये कहीं और के लिए था, इसके डिस्कशन में नहीं जाना है, तो हम आगे आ जाते हैं इसमें. अब हम अपने क्वेश्चन से लिंक करने की कोशिश करेंगे. सो द क्वेश्चन इज लाइक, लिखो राइट द मूवमेंट, लिखो राइट द मूवमेंट we think about purpose of life, it is very natural to think about the nature of the world in which we live. ये हमारा मेन था. अब नेचर ऑफ वर्ल्ड अंडरलाइन कर लो, इसी के बारे में हमको लिखना है. वॉट एवर यू नो अबाउट इट. नॉर्मली देखो ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है, तो लिखो राइट राइट वेदर इट इज वेस्ट और ईस्ट. Intellectuals have tried to understand the tendency of the world in which we live. ठीक है, अब लिखो राइट, इट इज क्वाइट नेचुरल. अब इतना भी है, हमको फिर स्टोरी बनानी, स्टोरी बनाना सीखना है. वाई डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव? इसके लिए कोई बात कहिए. यू शुड नॉट बी रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज. ठीक है, तो वाई डू यू थिंक इट इज एसेंशियल? आपको क्यों लग रहा है कि I should also know about the world? आप किसी शहर में जाते हैं, don't you want to know? Because you are living, there is an ecosystem. Fine, you are a part of it. You don't live in isolation. So you are going to be impacted by the developments. Plus, you will also make your own. But before that, you don't live in isolation. There is a complete ecosystem. And it is natural to know about the ecosystem in which we are living. ठीक है, तो इस वर्ड
is a world of change and time matters. To reach to it, how you can reach to this point, ठीक है, एंड टू रीच दिस पॉइंट यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन. अच्छा ये इसका तो फिर ये तो ये तो ये ऐसे क्वेश्चन करके ही फिलॉसफी में आगे बढ़ा जाता है. तो क्वेश्चंस रेज ऑन क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस, वरना एकदम लिखना चालू किया तो कंटेंट नहीं रहेगा आपके पास. ठीक है, तो और हर बात कह रहे हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, तो आई शुड ऑल्सो हैव स्टेटमेंट्स टू टेल. क्यों हम कह रहे हैं, आप बताइए उसको कि आप ये हम अपना सोचने का, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई थिंक अबाउट समथिंग. अगर मुझसे ये कहा जाता है कि आप जाकर के पंचायत को सक्सेसफुल बनाइए, हाउ डीपली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट. पंचायत क्या है, कब से है, क्यों आया, क्या होना चाहिए. तो क्वेश्चंस इज व्हाट, मतलब क्वेश्चन ही फिलॉसफी है. ठीक है, और कनेक्टिंग लाइंस आपके पास होनी चाहिए. तो अब इसमें आज इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है लास्ट, इट इज क्वाइट नेचुरल टू थिंक अबाउट द इकोसिस्टम in which we live. ठीक है, तो अब लिखो राइट hence the scholars in the Western world like Heraclitus, Heraclitus. अगर हेराक्लाइटस पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसका नाम नहीं लिखिए, नहीं आ रहा है तो लिखिए, क्योंकि फिलॉसफी जब भी कोई पढ़ेगा तो यहां से स्टार्ट करेगा ही. ठीक है, तो हेंस हेराक्लाइटस held that this world is a world of change. Similarly, the most renowned enlightenment philosopher Immanuel Kant held that this world is a world of phenomena. What is phenomena? घटना जहां होती है, right? Where events keep on happening. Eventful life का मतलब क्या? Unpredictable. ठीक है, इवेंट होना कि हम उस तरफ ले जा रहे हैं. तो थोड़ा फिलॉसफी, थोड़ा साइंस कंबाइन कर लीजिए. ठीक है, तो सिमिलरली आइंस्टीन थ्रू हिज theory of relativity has tried to convey that this world is a world of time and space. ठीक है, अब वेस्ट से फिर ईस्ट पे आ जाओ. ठीक है, तो फिर लिखो राइट द मोस्ट ऑफ द intellectual traditions in the Eastern world be it Hinduism,
Buddhism or Jainism also talk about the lack of permanence in the world of matter and always inspire to look for the world of permanence. ठीक है, तो वर्ड ऑफ परमानेंस अंडरलाइन करो. तो वर्ड ऑफ परमानेंस, दे ऑलवेज इंस्पायर फॉर हायर गोल. तो परमानेंस का मतलब क्या? दिस इज नॉट अ वर्ड ऑफ परमानेंस, तो दिस इज अ वर्ड ऑफ टाइम. टाइम क्वेश्चन में चूंकि टाइम है, ठीक है. एंड व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम? टाइम चेंजेस. फाइन. सो द आइडिया ऑफ चेंज, हम फिलॉसफी ऑफ टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है. तो टाइम की फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व्ड. देन वी विल टॉक अबाउट चेंज. तो पर्सन हैज अ गुड टाइम, पर्सन हैज अ बैड टाइम, ठीक है. फिर इसके बारे में भी यू डोंट टॉक टू द पॉइंट एक्चुअली, ठीक है. स्टोरी ही बनाते चलना है. ओके. तो व्हाट इज द लास्ट लाइन? परमानेंस को मतलब समझेंगे तो हम टाइम पे आ जाएंगे. फाइन. तो दे हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड दैट वी शुड बी रीचिंग टू द हायर गोल. अब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे डिजायर्स एंड इन सब से लिंक्ड है, ठीक है. तो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस मतलब फिर क्या है? देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओनली सोल इज परमानेंट, मैटर इज नॉट परमानेंट. तो वी कैन लिंक ऑल दिस टाइप ऑफ आइडियाज. फाइन. तो दे ऑल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परमानेंस. तो अब हम आ जाएंगे टाइम के कंसेप्ट पे, ठीक है. तो आप क्लू के फॉर्म में लिख लीजिए कि यू हैव टू नाउ कम टू द फिलॉसफी ऑफ टाइम. तो टाइम के बारे में नाउ थिंक लाइक अ फिलोसोफर. इन व्हाट वे time is understood? How do you understood? Every person is a philosopher. You don't need to be Socrates to think about time. तुम्हारे भी लाइफ में कभी टाइम अच्छा होगा, कभी टाइम खराब होगा, ठीक है. तो आप टाइम की कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इंप्रेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज करिए, फिलॉसफी ऑफ टाइम, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है. तो ट्राई टू ब्रिंग द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. तो अब फिर लिखते हैं, वी हैव जस्ट रिटन अबाउट ईस्ट वेस्ट दोनों हो गया, ठीक है. तो अब लिखते हैं कि राइट, हेंस वन general consensus that can be inferred is that this world is a world of time. अब टाइम को पकड़ लेंगे, ठीक है. तो लिखो राइट, द वेरी आइडिया ऑफ टाइम involves the idea of change. Full stop. The nature and characteristic of time is often expressed through philosophical statements like
We do not step in the same river twice. यूपीएससी के टॉपिक भी तुम अगर देख लोगे ना, वही से आंसर बन जाता है, ठीक है. वी डोंट स्टेप इन द सेम वाटर ट्वाइस, ठीक है. फिर अब थोड़ा 12th क्लास में पढ़ा होगा. सिमिलरली द इंग्लिश प्रोवर्ब इज व्हाट? यस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग. फिर कुछ अपने मन से लिख दो, नाम फिलोसोफर डाल देते हैं. लिखो, राइट, द फिलोसफिक विजडम goes to the extent of suggesting that time is money, right? One who does not value time will end up losing what best that person could have achieved. ठीक है. और टाइम के बारे में क्या, टाइम के बारे में क्या बताया जाता है घर में? समय नहीं बर्बाद करो, समय बदलता रहता है. और क्या बताया जाता है? हाँ हाँ, टाइम डजंट कम बैक, टाइम हैज गॉन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सिंस दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ टाइम, द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इज टाइम इटसेल्फ. फाइन. तो टाइम के बारे में बताया, लेकिन आप ऐसे भी तो बता सकते हैं, एंड बट वन शुड ऑल्सो हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टाइम. यू शुड हैव एबिलिटी टू गेन द राइट मैसेज ऑफ द टाइम. ठीक है. तो ऐसे इसको दिखाने के लिए कि हमको बहुत कुछ आता है, तो कुछ लैंग्वेज आप लिखिए, लिखिए लैंग्वेज. और जैसे कि ये टाइम पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, चेंज पे पूछ लिया गया, तो थोड़ा एग्जामिनर की बढ़ाई कर देते हैं. ठीक है, ठीक है. तो इसमें लिख देते हैं, फिलॉसफी ऑफ टाइम इज सच अ central question of intellectual endeavor that we can talk endlessly about its implications, its tendencies, the inherent messages. ठीक है. तो anyone, any example you can give? अब अभी तक तुम्हें लग रहा है इन्वायरमेंट पे बात करने की जरूरत पड़ रही है. इन्वायरमेंट पे बात, इन्वायरमेंट के ऐसे पे कर लेंगे. अगर आप इन्वायरमेंट कोई भी ऐसे आए जो आप, कौन सा पेटिकल, कौन सी अप्रोच बताते हैं? पेस्टल. पेस्टल ना, PASTL, PES. अच्छा, हमने पेस्टल, करोला, ऐसे कुछ होता था ना फूल में. ठीक है. तो वो अगर हम वो वाली अप्रोच कर रहे हैं, उससे ही पता चल रहा है कि आप वो कर ही नहीं रहे जो करना है. You are just wasting time and you are just short of ideas and you are thinking that some illustrations are able to prove. You have to develop the argument. ठीक है. तो आर्ग्यूमेंट पर पहुंचने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होते जाना,
देते जाना, और स्टाइल के साथ, इन द सेंस यू नो हाउ टू टेल। मुझे मान लो 2 पन्ने ना लिखे जाए टाइम पर, लेकिन मैं कहूंगी कि टाइम इज सच अ इशू, द एंटायर लाइफ आई विल कीप ऑन राइटिंग, स्टिल वी कैन नॉट से इनफ। ठीक है, आई लाइक philosophers have said so much that few pages are not enough. Have you understood this? तो नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम कह तो सकते, लिखा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो किसका टाइम, मतलब वी विल बी एग्जॉस्टेड, बिकॉज लिख रहे हैं ना, फ्रॉम हेराक्लाइटस से लेके 21st सेंचुरी तक लिख ही रहे हैं, हमें नहीं पता है तो क्या। लेकिन हम क्यों बताएं, हम कह देंगे कि हमें इतना पता है, लेकिन समय नहीं है, हमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। आया? तो थोड़ा ये भी दिखाना है कि यू आर क्लेवर लाइक फॉक्स। ठीक है, तो आपने टाइम के बारे में अब तक जो भी जाना, उसमें क्या चीज आपको सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट लगी? से समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टाइम। टाइम चेंजेस, everyone has equal time, no, some people sleep more, I sleep less. अरे टाइम की एक आप इंटेलिजेंट व्यक्ति जैसे कुछ बताइए। अपनी जितनी नॉलेज से, अच्छा, इट विल नेवर कम अगेन, इट नेवर, टाइम नेवर स्टॉप्स। अरे एक कॉमन मैन, कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ टाइम आइम हो गया, बट आप अपना क्लास शो कर सकते हो। ठीक है, कि आउट ऑफ ऑल फिलोसफीज ऑफ टाइम, what message you have got? The message is everything has a time. ठीक है, and there is someone who understand the time or moment. Fine. So if you understand the time, you have a potential to become the king. ठीक है, so see why Gandhi is Gandhi. He understood the time. तो इतनी टाइम की थियोरीज और टाइम की स्टोरीज से आपका कौन सा मेन है? हैव यू अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई, तो टाइम के ऊपर बात करिए। कुछ भी कहो, मतलब फिलोसफिकल एसेस की कोई थोड़ा बहुत जान लिया, अभी मैं लिखा भी दूंगी, थोड़ा जैनिज्म बुद्धिज्म सबकी वे ऑफ, बस इतना बहुत है। और ऐसे लिखते जाओ ना, ट्राई टू डेवलप द स्टोरी। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। और इन क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो, जैसे यू कैन राइड एंडलेसली ऑन द टाइम। ठीक है, और दिस बिकॉज यू लिव इन इकोसिस्टम, ये जो इस तरीके के क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं टू ब्रिंग द लिंक्स, कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखते हैं, राइट, लिखो, राइट, आउट ऑफ multitudes of meanings, interpretations, messages which the philosophy of time gives. One very motivating message is from the Italian intellectual known for his statecraft.
statecraft, that is Machiavelli, who held that prince should know the movement. ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखो राइट हेंस इफ, ऐसे अब हम कह रहे हैं इससे क्वेश्चन से लिंक हो गया ये, और हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ये टॉपिक ही नहीं सोचा था हम ये करेंगे, हमने तो ये टॉपिक करने थे जो आपको दिए थे, लेकिन लग नहीं रहा है सोचने की जरूरत। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया, हाँ क्या था, टाइम पे आ गए, ये मूवमेंट ही तो है, टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द प्रिंस शुड अंडरस्टैंड द मूवमेंट। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कुछ था अच्छा सा है, क्या क्या था, what was the name I said? Prince should know the movement. हाँ, इसका मतलब है ऐसे लिख सकते हैं, hence if we understand the time, हाँ अब आ गया, उससे लिंक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड द टाइम, इसको फुल स्टॉप करके आगे सब लिखो जो हम पहले लिखाना चाह रहे थे, अब लिखो राइट हेंस इन आवर क्वेस्ट फॉर गुड लाइफ एंड द वेरियस डिक्टम्स associated with it, Machiavelli's saying appears to be quite motivating. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसको सम अप करके कहीं एग्जामिनर टॉपिक ही ना भूल जाए, ठीक है, तो आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं above discussion shows this, above discussion shows that the question of good life is linked to person's understanding of time. ठीक है, फिर इसी में लिख सकते हैं टाइम as well as the changing nature of this world. अब हम changing nature of this world पे बात करेंगे, और we will talk about unpredictabilities and the problems that happen because of unpredictabilities. Fine. So what we all want a smooth life. We all want that the good times continue, but any such person is foolish if that person thinks like that. ठीक है, या जब हमने जैसे मूवमेंट की बात की थी तो उस समय हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते थे। ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग द टाइम वी कैन से दैट इफ दिस पर्सन दैट पर्सन, आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, दैट वी हैव गॉन फॉर टेकिंग सर्टेन preparedness in advance that has helped in minimizing the damage etc. This shows that, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी अपना एनेक्डोट भी दे सकते हैं। तो अब हमको
इस बात के ऊपर बेसिकली डिस्कस करना है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, तो और क्वेश्चन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम अब लेट अस टॉक, ठीक है, तो इसमें अब हम कहेंगे कि राइट, अब इसी को लास्ट से लिखो, राइट, इसी को सेंटेंस लेके कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इट इज सेड दैट time to repair the roof is when the sun is shining. Right? If इसी में लिखो, if we deconstruct the statement, we can reach to the आराम से we can reach to the hidden message. अंडरलाइन कर दो हिडन मैसेज। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखो राइट, द वर्ड ऑफ विजडम हियर इज any wise person understands the unpredictability as inevitable feature of this world. ठीक है, फिर लिखते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग वी डेवलप comfort zones, comma, we have inherent tendency to look for stability as well as order. ठीक है, अब लिखो बट ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है, लिखो राइट, हाउएवर इट इज सेड दैट man proposes, God disposes. ठीक है, तो अब लिखो राइट, it means that life does not always move on predictable lines. ठीक है, लिखो राइट, it is not necessary that we think about क्या हमने बताया था, अनप्रिडिक्टेबल, क्या सेंटेंस हो सकता है, मतलब वो नहीं, वर्ड मतलब जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अनसर्टेनिटी, हाँ हाँ, क्या लिखा है लास्ट में, अभी आ जाएगा वर्ड, क्या लिखा हमने, it is not necessary that unpredictability always comes with the challenges or adversities. आप टाइम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप कैसे देख रहे हैं, नॉर्मली आप नेगेटिव सेंस में देख रहे होंगे इस सेंटेंस के इन्फ्लुएंस में, लेकिन हाँ ठीक है, तो लिखो राइट, लिखो राइट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड चेंजेस
can also carry many times pleasant surprises, full stop, right? At times we also get which we may not have, yeah, or at times we may also be rewarded more than what we have expected. Okay. Right? Is still the predominant human tendency is to look towards the darker aspects of uncertainties of life. Hence, since childhood, we have been made accustomed to many such advices that how we should be handling the difficult times. ठीक है, अब लिखो one pragmatic advice is preparedness. Right? Right? It is said that time may change and especially when we are having a good time, we should not get complacent. Right? While enjoying the good times, it makes sense to prepare for any unwanted eventualities. ठीक है, अंडरलाइन करो अनवांटेड इवेंचुअलिटीज. तो इसको लेकर के जो विजडम है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, लिखो राइट, अक्रॉस disciplines we see the advices or institutions based on the idea. अब जैसे कोई वर्ड हो या कोई मेटाफर है तो उसको आप इंटरप्रेट मतलब
आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि व्हाट मीनिंग यू टेक एंड हाउ यू आर गोइंग टू इन्फर. ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं राइट बिफोर या बिफोर अंडरस्टैंडिंग फर्दर the importance of taking preventive and timely steps, it is worthwhile to understand the meanings of the terms used in the statement. Right here, the term sun is shining give us the message of good times, comma, roof give the message of shelter, and time to repair tells the importance of taking the proactive approach. वर्ड्स को एक एक वर्ड को एनालाइज करके कि आप ये समझ के आंसर दे रहे हैं. कोई और कुछ और समझ के भी दे सकता है, इंटरप्रिटेशन चेंज भी हो सकता है, दे सकते हैं. तो पहले हम थियरी फिर एक्शन पे आएंगे, पहले जनरल. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं राइट द आइडिया ऑफ रिपेयरिंग द रूफ इन टाइम is evident in almost all walks of life. Right? The very idea of insurance in modern economies, the idea of being prepared in handling the emergencies, disasters is now a very well established principle of good governance. Right? We can give numerous examples across sectors where the idea is in operation. For example, the climate change talks are aiming at to take preventive measures
to deal with the climate changes before it becomes unmanageable. Right? Similarly, if we give example from India, right, the recent steps by government to strengthen the border infrastructure, developing indigenous capacity in the field of defense, the active diplomacy is to avoid any unwanted development on the borders and not to repeat the mistake of 1962 when India was caught unprepared, giving opportunity to China to take the advantage. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में तो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, लिखो राइट, नन ऑफ the theories of modern day governance or management practices can ignore the importance of proactive preparedness. Comma, it is said that a stitch in time saves nine. ठीक है, अब लिखो राइट, अब हम इसका नॉर्मली जो स्टेटमेंट हो उसके बियॉन्ड जाओ. ठीक है, इट इज सेइंग टाइम टू रिपेयर द रूफ when the sun is shining. It is related to your preparation, but it is not necessary that what you have prepared will actually work. ठीक है, तो still it may happen. Then besides preparation, you would also require to cultivate certain qualities like perseverance, like courage, to deal with against all odds. Fine, so we have to be practical enough, and the reason is again the tendency of this universe, because nothing is certain, nothing is predictable. Making preparation is good, but
we should be realistic enough to understand that it may not work. So in this situation, we should not be losing heart. We should not be submitting ourselves to the bad times. Rather, we will have to bank on the courage. For example, the recent floods, etc., the force of nature at times becomes so strong that the human preparedness may appear too less. But it is always a work in progress. It is always about learning and doing and learning and improving. And ultimately, we should never be losing the courage and perseverance. ठीक है, जैसे हम केवल इतना नहीं सोचेंगे टाइम टू रिपेयर द रूफ, हम ये भी सोचेंगे रूफ बना तो ली लेकिन ढह गई, फिर तब क्या करेंगे? तो रोते बैठेंगे या कहीं और जाके बचेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन टाइम इज टाइम। ठीक है, तो आगे उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। अभी कितने पेज हो गए? 10 पेज लिखने होते हैं, हैं? हो गए? अरे बस, तो अब लिख लोगे तुम लोग? हैं? क्या कंक्लूजन तो छोड़ो, लेकिन फिलोसफिकल क्वेश्चन लिख लेंगे आप? मुश्किल है। 6 हो गए इनके, 9 हो गए। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखो। 15 हो गए। चलिए, तो सम मिला के चलिए अब हम आगे इसमें हमेशा दिखाना है कि आपकी विजन क्या है इसको लेके, कि तुम बस प्रिपेयर करके बैठ गए और बाद में पता चला कि कोई फायदा नहीं हुआ रिपेयर करके। ठीक है, तो भी क्या करना है? डोंट लूज योर हार्ट। ठीक है, तो ये भी बता दो, तो तुम ये दिखाओ प्रैग्मेटिक रहो, और वो फिर इसी से लिंक्ड है टेंडेंसी ऑफ टाइम से। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। ठीक है, अब लिखो राइट। दो it is wise to take necessary steps to prepare for bad times when the sun is shining, because in good times it will be much easier for us to plan calmly. टाइम टू रिपेयर, इससे भी हम लोग थोड़ा लेंगे ना, व्हेन इट इज गुड टाइम, बिकॉज गुड टाइम में आप आसानी से चीजें कर सकते हैं। टू प्रिपेयर कामली, वी कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, थिंक मोर डीपली, एंड कैन टेक बेटर डिसीजंस। तो ये चीज मिस नहीं होगी अगर वर्ड्स को अपना कि रिपेयर के टाइम में ही आप क्यों कर रहे हैं, वैसे इसलिए इसको ब्रेक करके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, फिर लिखो राइट इज स्टिल देयर इज नो गारंटी ठीक है दैट whatever we have prepared will work. Look, right, Shakespeare
has expressed this dilemma of life in his famous play Macbeth. Macbeth, Macbeth, when he says that this life is a stage and we are actors. डॉट डॉट करके उसमें लिख दो, या इतना नहीं भी लिखना है तो ये लिख दो, हैज हेल्ड दैट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. लाइफ इज अ टेल, कहानी, टोल्ड बाय एन इडियट. मतलब जिंदगी में कुछ भी हो सकता है कभी भी, कोई भी प्रिपरेशन, यानी एग्जामिनर है इडियट. ठीक है, एसेस प्रिपेयर्डनेस से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं. टाइम फिर भी प्रिपेयर कितना भी कर लो, कितना भी प्रिपेयर कर लो, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आए वैसे फिर, यानी सब प्रिपरेशन तो बेकार है. तो ऐसे सिनेरियो में आपकी मदद करेगा, then comes the test of your personality. ठीक है. So ultimately one thing one should never ignore is how continuously cultivate and nurture the qualities that will help you, या help us in managing through the adversities. प्रिपरेशन के बाद भी अल्टीमेटली तुमको ये वाला फैक्टर तो लेके चलना ही पड़ेगा ना. मैकियावेली ने भी तो लिखा है, बैड टाइम्स कम, रोल ऑफ फॉर्च्यून. ठीक है, तो हम लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं लास्ट लाइन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. ये भी काफी, इसका मतलब है कि कुछ काम नहीं आता. ठीक है, सब पढ़ लिया अपना सी सेट प्रिपरेशन, काम कहाँ आता है, काम, पढ़ाई तो काम नहीं आती वहां पे, बुद्धि काम आती है. ठीक है, नॉलेज नहीं काम आती, आपका विजडम ही काम आता है. और कोई भी पैटर्न नहीं है एक्चुअली. ठीक है, तो अब लिख सकते हो, इसमें लिखो राइट, हेंस देयर इज नो गारंटी, हेंस देयर इज नो गारंटी that we will, there is no guarantee that the preparations we have done will work in the way we have planned. This itself reminds us the challenge time throws. ठीक है, अब लिखो राइट, in fact the lack of certainty is a test of our personality. It is a test of our courage, endurance, perseverance, optimism, and above all, belief in oneself. बिलीफ इन वन सेल्फ का एक धांसू सा डायलॉग क्या हो सकता है,
अहम ब्रह्मास्मि, बिलीफ इन वन सेल्फ. देखो, द एंशियंट इंडियन विजडम सजेस्ट अहम ब्रह्मास्मि. ठीक है, गॉड हेल्प दो, मतलब यही है. अब तुम गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स बोलोगे, अब हम अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे. अब बताओ कौन ज्यादा बढ़िया वाला है? अहम ब्रह्मास्मि. अब कोई और होगा, मान लो वो बोलेगा खुद ही को कर बुलंद इतना है, तो वो भी तो आ सकता है ना कि खुदा तकदीर. तो ऐसे मतलब ये दिखाना है कि हम किसी भी कीमत पे हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा. ठीक है, क्या है? जल चलाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. इसी पे खत्म कर दीजिए आप. क्यों नहीं लिख सकते? अपनी मातृभाषा, प्राइम मिनिस्टर की भाषा है नहीं, लेकिन हिंदी तो बोलते हैं. ये लिख लो, इसमें लिख सकते हैं ये सब. कुछ कुछ कविता विता आप लिख लीजिए. ये वाला भी आई थिंक काफी काम आ सकता है. हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा, लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. लिख लो इसे, लिखो ये सब. अरे जो आता है लिखो ना. अब ये कोई बहुत बड़ी चीज है एकदम फिलोसॉफिकल एसेज, ऐसे एस्टल पेस्टल के क्या क्या बना के, उससे ज्यादा नहीं परेशानी होती. डोंट elaborate. Elaboration is not required. You should understand backward and move forward. फिर वे भी थोड़ा सा यूपीएस है थोड़ा सॉक्रेटिस वाला उसका शेक्सपियर वो बोला कि थोड़ा मोनोटोनस लगते हैं, एग्जांपल्स कम लिख रहे थे. किसने बोला? इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्या बोला. आई विल ओनली लिसन subject to the condition who is speaking. I am not going to listen to any Tom, Dick and Harry. उसके सजेशन नहीं लेंगे हम. कौन बोल रहा है? कोई प्रोफेसर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? टेस्ट सीरीज में इवेल्युएटर जो इस साल एग्जाम नहीं दे रहा क्योंकि उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और तुम उसकी बातें, तो उससे तो तुम ही बेहतर हो. फॉरगेट. नहीं लिखना है. यू कांट. आई नेवर बिलीव कि यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर माइंड बिफोर यू राइट. इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, तो ये लिख लेना. या फिर ये भी लिख सकते हो, woods are lovely dark and deep, we have miles to go before, या arise awake, anything like end at this note. ठीक है. Now besides this, like we could have also discussed like some wisdom in Indian texts etc, how to deal with the bad times. ठीक है, तो इसमें लिखने से पहले ये भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब इसी में लिखो राइट. इट इज ऑल्सो, या इट इज ऑल्सो वर्थ mentioning how our forefathers have advised to deal with the challenges life throws in front of us. कुछ याद है? किसी ने बताया हो आपको?
जिंदगी में किसी से कोई सीख ली आपने? एडवर्सिटी आए तो किसी ने कोई सीख दी, बेटा भाग जाना, कुछ तो होगा। इन फोर फादर्स लिखो, राइट, राइट, वी कैन गिव रेफरेंस टू, अरे अभी तो एकदम सही याद आ गया, वी कैन गिव रेफरेंस टू, दो का कर सकते हैं। पहला कृष्णा, वी कैन गिव रेफरेंस टू कृष्णा while addressing the dilemma of Arjun, who was fearful, comma, right, who was fearful before the war, where Krishna suggested inspired for nishkam karma. Right? Similarly, Buddha, who is known as Light of Asia, has proposed, क्या प्रपोज किया? मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, the eightfold policy to deal with the uncertainties of life. We can also give reference to, or we can also take inspiration from the Western philosopher Nietzsche, who held that man's will to power can help him, can take him to become Superman. ठीक है, और नीचे लिख देना, अगर मिलना हो तो हमारा नाम, पता, फोन नंबर, गांव, थाना, ठीक है, ऐसे लिख देना कि वैसे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टाइम अगर खराब हो और आपको जरूरत पड़े, ये हमारा पता है, ये गांव, ये थाना, ये तालुका, कांटेक्ट मी, ठीक है। तो आ गया ये ऐसे मुझे कराना नहीं था एक्चुअली, ठीक है। आप इस पे किया जाए, दिमाग लगाया जाए, इस पे कैसे दिमाग लगाया जाए? रियल इज रैशनल एंड रैशनल, लेकिन अब तो आएगा नहीं, दोबारा तो नहीं आएगा, ठीक है। जो हमने दिया है वो वाला जरा निकाल के, क्या ईयर बताओ? 2003। इसमें तो नहीं है,
इफ यूथ न्यू, इफ एज कुड। तो मतलब यूथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एडवेंचरस। और एज मतलब एक्सपीरियंस। तो दोनों को कंबाइन कर सकता है। ठीक है। और एज के पास दुनिया स्ट्रेंथ होती है, इतना मैटर। तो बहुत ही अच्छा होता है, यही तो मिसिंग है, वही तो मैसेज है, कॉम्प्लीमेंट। और कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल लेट अस सी दिस, लेट अस सी दिस थिंग। आई काउंट हिम ब्रेवर, है ना, इसमें टॉपिक है आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स देन he who overcomes his enemies. I count him braver who overcomes. और कुछ भी जबरदस्ती इकोनॉमी इन्वायरमेंट नहीं डालो, नेचुरली फ्लो में आता है तभी डालिए। पहले से दिमाग को रेस्ट्रिक्ट करके नहीं सोचना है। ठीक है, तो आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स rather his enemies. Desires. Braver. एक ही थीम सब में ही रहता है वैसे। मतलब क्या है, what is the message of this? हाँ, desire is a cause of sorrow. ठीक है, suffering, yes, हाँ। Anyway, मतलब कुछ डिजायर को लेके प्रॉब्लम है इनको। आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर rather than his enemies. वही तो है, be the change. Yes, वही है, outside enemies, be the change you want to see in others. कुछ भी इस ढंग से हो सकता है, यानी कि winning oneself. ठीक है, addressing one's weaknesses. So before fighting the outside world, we have to first address our weaknesses. ठीक है, और जो वो जो ऐसे प्रिपरेशन वाला आए कल या आजकल, अब आता रहेगा प्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर्डनेस पे, तो उसमें तुम सुनजू का भी डाल सकते हो। ठीक है, हैं? आर्ट ऑफ वॉर का, बट कौन सा स्टेटमेंट था? नहीं नहीं, प्रिपेयर्डनेस पे था कि टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी इज अ रेसिपी फॉर डिफीट करके। ठीक है, तो यू टैक्टिक्स मीन्स यू टेक फायर फाइटिंग अप्रोच, या पिछले वाले ऐसे में हम ये भी कर सकते हैं कि वी हैव सीन इफ वी विल नॉट टेक एक्शन इन टाइम, then when adversities come we will go for firefighting approaches. So firefighting approach itself has unpredictability. Fine, so it is always better to avoid firefighting at the last moment. ठीक है,
तो अब इसमें सेंट्रल आइडिया फिर क्या है? ओवरकम करना है, तो कुछ ओवरकम करने का मतलब है कुछ तो स्ट्रगल होनी चाहिए। किसको ओवरकम करेंगे? चैलेंज को। हाँ, मतलब चैलेंज, और चैलेंज के लिए आपको चाहिए करेज। ठीक है, तो चैलेंज आ कहां से रहे? एनिमीज। तो एनिमीज हो गए आपके एक्सटर्नल, आप मान लें, लेकिन डिजायर्स ये आप मान सकते हैं इंटरनल। और ये जो इंटरनल प्रेडिकामेंट टू द मोशन, या जो इंटरनल है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक लाइन में पहले इसको बताएं। तो एक लाइन या इसका मीनिंग पैराफ्रेज इफ वी डू, it means that this, like, life is full of struggle. You can talk about Hitler's main camp also, my struggle. So life is full of struggle. कुछ सुभाष चंद्र बोस का भी है ना स्ट्रगल वाला ही, उनकी बुक है कुछ स्ट्रगल है। इंडियन स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल है, या माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ है। ठीक है, तो आई काउंट हिम ब्रेवर, इसको कैसे पैराफ्रेज किया जाए? मीन्स द लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज नेवर a bed of roses. We keep on facing the challenges, fine, but the best way to, कुछ इसमें भी खास डिफरेंट नहीं लग रहा है, बेस्ट वे टू डील विथ challenges is to prepare ourselves. ये थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। prepare ourselves means we should be able to have calmness of mind, control। ठीक है, तो fighting how we can become a better self of ours, इस तरीके से कुछ इसको हम करते हैं। तो अगर जैसे ना मिले कि एकदम से कोई खास हम बोल पाए, तो आप स्टार्ट करिए कंसेप्शन ऑफ डिजायर से, या इसके तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिल सकते हैं कि एनी एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव? बुद्धा यू कैन गिव, हिटलर का मत दो, बुद्धा का दे दो। ब्रेवर हु ओवरकम हिज डिजायर्स, राम को तो नहीं करेंगे, अशोका, अशोका, अशोका का एग्जाम्पल बेस्ट आएगा इसमें। मतलब अशोका बिफोर going for Dhamma and after. So he reached to the glory. His glory has increased and he became immortal. ठीक है, after he embraced Dhamma. And Dhamma was what? A attempt to overcome the worldly desires. ठीक है, तो now अशोका का ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन हमेशा जब तक नहीं कुछ आ रहा है तो डिजायर्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट, वी हैव टू ओपन अप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर। ठीक है, तो ऐसे इसका कैसे हम स्टार्ट करेंगे? इसमें ऐसे लिखो, राइट, the central philosophical question in search of good life across
the religions and the philosophical texts has been the question of desire and impact of desire on the prospects of human life. ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल मीनिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. लिखो राइट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिंकेजेस between desire and good life, it is essential to understand the meaning of desires. ठीक है, लिखो राइट, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिजायर इंक्लूड या इम्प्लाइज. क्या होता है डिजायर? इस कॉन्सेप्ट को आप कितना पहले एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो भी एक फिलॉसफी का तरीका है. जैसे फिलॉसफी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, फिल्टरिंग द आइडिया. फाइन, तो आइडिया तो उससे निकालना. तो डिजायर मीन्स व्हाट इज डिजायर? यू डिजायर समथिंग मीन्स यू वांट समथिंग. ठीक है, यू हैव अ क्रेविंग फॉर समथिंग, यू वांट समथिंग इज अ डिजायर. ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए? डिजायर इज क्रेविंग फॉर समथिंग और वांट. अब यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, लिखो राइट, it is essential to distinguish between needs and desires, or needs and wants. ठीक है, तो needs are the basic requirements of sustenance of human life. However, wants go beyond the desire, beyond the basic needs. ठीक है, अब लिखो राइट, whether desires are desirable is itself a issue of debate among intellectuals. Right? We can see two set of ideas. First, where desires are seen
as excessive lust for material pleasures and it is seen as destroying the goodness of life. For example, if we talk about the philosophy of Buddha, which talks about the Four Noble Truths. First, the life is full of sorrow. यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और गीता और थोड़ा बहुत उपनिषद्स के कॉन्सेप्ट्स, ये कुछ पढ़ लोगे. वेस्टर्न फिलॉसफी आपको पता ही है ज्यादातर, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं. और कुछ अगर हम 10-15 इंग्लिश के प्रोवर्ब्स रख लें तो शायद काम बन जाएगा. एग्जाम्पल्स तो आप जीएस से भी दे सकते हैं. ठीक है, तो बुद्धा का क्या है? 4 ट्रुथ्स. तो 4 ट्रुथ्स में फर्स्ट क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो. सेकेंड, डिजायर is a cause of sorrow. Third क्या है? Desire can be overcome. Fourth, follow eightfold path. ठीक है, आप लिखो राइट. Similarly, in Jainism, the person who overcomes his physical desires is called as जिन. JIN. GIN ना लिख देना. is called as जिन. GINA. जिना. ज्ञानवान समथिंग. जितेंद्रिय ऐसे ना. ठीक है, अब इसमें लिखो राइट. राइट इन, या एक और लिखते हैं. सिमिलरली इन बाइबल ऑल्सो desire for physical pleasures or the worldly things is seen as the cause of sorrow. ठीक है, right. The Bible explains that the lust for apple ended the क्या क्या खत्म किया था? No one knows Bible. वो क्या है? एडन गार्डन है? नहीं है तो, लेकिन पूरी स्टोरी क्या है? Ended the bliss of Eden. किसी ने आप बाइबल नहीं पढ़ी है क्या? बाइबल, गीता, कुरान, यही सब पढ़ लो, बाकी सारी लाइफ क्लियर हो जाए. चलो, है बागेश्वर बाबा. और एक राधे माँ भी तो है, अब नहीं है आजकल.
उनका नहीं चल रहा है आजकल। ठीक, तुम लोग यही सब, आई डोंट नो वो कौन है सब। चलो एनीवे, चलो आगे लिखते हैं। हैं? काहे का वीकेंड बैच? बाइबल मैं, मेरे को खुद पढ़ना है, मतलब आई वांट टू रीड ऑल वेदास। वेदास में हो सकती है साथ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज इनहैंस हो जाती है। मतलब अगर आप 2-3 पन्ने भी पढ़ लेते हैं तो आपका लेवल चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसे पढ़ लो सच में, है दंगे क्यों हो जाएंगे? वी कैन स्टार्ट अ डायलॉग, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं। चलो फिलहाल कहाँ पहुंच गए हम? मतलब देख लेना वो उसका एग्जैक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो बाइबल वो थोड़ा सा जो है वो अदर वर्ल्डली टाइप ज्यादा है। अब लिखो राइट। अब इसमें जब ये सब फिलॉसफीज हैं तो हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग डिजायर्स, ठीक है। तो अब लिखो राइट, इन दीज फिलॉसफीज या इन दीज वर्ल्ड व्यूज कह सकते हैं आप, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन्स कह सकते हैं। In these worldviews or comprehensive doctrines, desires are understood as material pleasures. ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, ऑन द अदर हैंड there are doctrines like sophism, epicureanism, epicureans, Epicurean, epicureanism, and in Indian tradition Charvak's philosophy known as Lokayat, right, suggest that human life should aim at a life of pleasure, right? Right? A famous British, what? Second, देखो right, a famous English philosopher, reformer, economist, Bentham has mentioned that all human actions are guided by pleasure and pain. ठीक है। नेक्स्ट लिखो राइट, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट the world views which take more balanced approach towards the desires. Full stop, right? For example, if we talk about Quran, it mentions that
all desires are not bad, right? God has given life to man with the objective of good life, which includes material pleasures, even sexual desires in the form of procreation, comma, the continuation of human race. But it also suggests that we should not overindulge in the worldly pleasures and continue to follow the path of God. Right? Hence, if desires are, if desires come, handled in a right manner, right, it itself can be treated as the will of God. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, राइट? तो उसी में वो क्या कहते हैं कि शरीयत फॉलो करें या कोड ऑफ कंडक्ट, वही है जो 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है, कि आप सब कुछ करें लेकिन राइट कंडक्ट में करें। डिजायर्स खत्म नहीं करनी है, डिजायर्स नेचुरल है, लेकिन आपका जो एक लिमिट्स है, यू फॉलो दैट डिसिप्लिन, डिजायर विथ डिसिप्लिन, ठीक है। एंड बोथ the origin of the terms desire and disciplines are from similar, fine. So sometimes you should also, if you know, you can go for the etymological origins of the terms and link it, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, we can link the desires, the desire with discipline. आप लिखो, राइट? सिमिलरली the Hindu view of life talks about 4 purusharthas, right, which with Hindu life divided into different stages in context of the goal to be attained, right? Among the 4 purusharthas, that is dharma, arth, काम, मोक्ष,
comma, calm and earth and calm reflect the material pleasures. Right? However, similar to Quran, it also suggests that these pleasures should be achieved in the broader context of dharma and the ultimate ideal should be the attainment of moksha. ठीक है, फिर इसी में लिखो राइट इन हिंदू टेक्स्ट्स राइट कुबेर कुबेर is seen as the god of earth and Kamadev is seen as the god of calm or sexual pleasures. ठीक है, अब हम इस डिस्कशन से अपने पर्सपेक्टिव तक पहुंचेंगे. मतलब आप कुछ बात कहें बट उसका एक बेसिस बना के कहें. ठीक है, तो अब इसमें लास्ट में आप क्या लिखे और हमेशा ऐसे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ above analysis it can be said that मतलब आप कौन सी पोजीशन ले रहे हैं that all desires are not bad. Desires are themselves the force of life. Right? It was the desire of Brahma that the universe is created. Right? Desires have been the factor behind human action. Right? It was a desire to see India free, to see India as a free country that brought Indians together to fight for their motherland. Right? It was desire which gave indomitable courage to fight the mighty
colonial empire. फिर लिखो right. Similarly, right, at present, it is an aspiration of Indians that India should get its rightful place in the Committee of Nations, that we all have made a pledge, no pledge oblique tryst with destiny. Tryst with destiny, TRYST, tryst with destiny. इसमें लिखो right, it was a desire that we could dream about becoming a developed country by 2047. फिर लिखो right. Similarly, it was a desire of man to conquer nature that has given courage to land on the moon. Right? Neil Armstrong, right, rightly said that man's landing at a moon is a great leap for the mankind. Great leap, एक ऊंची छलांग, बिल्कुल ठीक है. फिर लिखो right. However, there is a other side of the coin too. Where the uncontrollable desire for power and domination led certain, inverted commas में लिख दो, madmen like Hitler to commit the crimes of genocide. It is an unthinkable, unsatiable desire for accumulation of profits that has led to irreplaceable damage to the environment, biodiversity,
and even the existential crisis. Right? It means one should also be aware of which desires are worth and which desires have to be controlled. अब बताओ, अब हम बताएंगे which desires to be controlled. इसका क्या बेसिस होगा? तो जैसे मैं ऐसे डेवलप कर रही हूँ, तुम लोग दोनों साइड देख रहे थे कि एकदम क्वेश्चन के फ्लो में जा रहे थे, हैं? मत जैसे दोनों साइड्स आर्ग्यूमेंट्स करो, ठीक है? डिजायर, किसी ने कहा कि कॉन्कर द डिजायर, एकदम उसकी बात नहीं माननी, अपनी बात रख के उसकी बात माननी, ठीक है? तो चाहे वो कितना बड़ा सोक्रेटिस आ जाए, अपनी बात भी रखनी है कि भाई डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, हर डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको करेक्ट करिए. इज दैट क्लियर? तो योर एबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है? तो आई थिंक विल कंटिन्यू दिस टुमारो, सेम टाइम में ही आओ. कोई टाइम क्लास है क्या कल अक्टूबर? यही टाइम बताया है. तो अपने पास टाइम कम है, आप ये तीनों एसेस थोड़ा, 2 मिले, मैंने 3 दिए, दिख नहीं हो रहा होगा. सी द इनविजिबल. हाँ, रीड बिटवीन द लाइन में तो इनफाइनाइट एसेस. हमको लग रहा है बस इसी से बन जाएगा काम, है? कोशिश करने वाले की हार तो होती नहीं वैसे. यू डोंट हैव 3 एसेस, है? PYQ भी ले लेते हैं. पहले ये पढ़ लो अगर टाइम हो तो. तुम्हें कौन सा मिला है? ब्रेवर हु ओवरकम द डिजायर, बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, क्योंकि ये एक बेसिक फिलोसॉफिकल इशू है विजडम विजडम वाला, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही जाएगा. मिड्स ऑफ केओस है ना इनके पास, जाते जाते दे दो, पढ़ लेंगे, ठीक है?